Facing difficulties while choosing a dream destination? Having the problem of going for a hassle-free application process? Thinking about the PR and the work stay? We have got the right experts for you. Hi everyone, welcome to Real Talk with Global. I am your host Khushbu and we have our country experts with us. Please welcome our country experts. We have Garima from UK, we have Priyanka from Canada and we have Madhav. Hi. So Madhav, I want to know if a student is planning for Australia right now, what are the top priority things that he should look for in Australia? So I think खुशबू जो पहली चीज दिमाग में आती है for Australia, that is the world ranking of the universities. Right. Universities like University of Sydney, Monash University, University of Queensland. I mean, they are all world top 50. Right. They give you scholarships, they give you early offer letters, they give you a lot of part-time opportunities. वहाँ पे आपको internship करने को मिलेगा, co-op मिलेगा. So definitely Australia comes out to be the top option. I think it's one of the countries where we have a legacy when it comes to the university we choose, right? Absolutely. Logo goes long, like around 1850 when University of Sydney was made. I think so. Years and years of legacy to carry on, right? Absolutely. Priyanka, if a person and if a student has to choose Canada right now, what are the top things the student will always get attracted to when it comes to Canada? See, when it comes to Canada, Khushbu, there are multiple things. Firstly, I'll start with, it is the second happiest country in the world. So if I have to understand the one fact you will be happy in Canada. Secondly, if I have to, understand that they have specialized one-year programs, which is not available in majority of the countries in the world. So if a student has done, suppose a BCom, and he wants to have something related to finance or accounts for 1 year, he can probably opt for that Canada. PSW is very well settled there. And of course, the last and the most important point and the most demanding among international students is the fastest PR. I think that's one of the points which is already there, that Canada sunte hi लोगों को लगता है कि बस PR के लिए ही तो जाना है. If I'm flying to Canada, I want to stay there and I want to get the PR, right? Coming to you, Garima, so I think UK has been one of the destinations which has been picked up very recently, right? And I think post-COVID, जो बच्चों के जाने गए, the number of students who have gone from India is very high. Right, so I want to know from you, what are the things that are very attracted towards student right now in UK? Khushbu, UK का क्या है, क्योंकि we and Britain shared so much legacy and so much history together. अब तो बहुत कंट्रीज़ हम लोगों को पता चल गई हैं. जब मैं बड़ी हो रही थी तो हम जब बोलते थे कि बाहर पढ़ने जाना है तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब था कि हम UK ही पढ़ने जाएंगे. तो एक वो जो पूरा लेगेसी दोनों कंट्रीज़ शेयर करती हैं. The second thing is the kind of culture UK has, मतलब UK का culture जो आज हम modern civilization, the influence is already there in India, right? वो पूरा the fountain head जो वहाँ जो वो सोत्र है वो पूरा UK ही है उसका. The third thing is that UK has very intense short duration programs. UK में masters is 1 year और वो पूरे साल में बहुत intensely आपको पढ़ाते हैं. तो you're not compromising on academics and वो एक साल में ही आप काफ़ी कुछ कवर कर लेते हो. उसके बाद आपका 2 साल का स्टे बैक है. अभी जो गवर्नमेंट नहीं आई है, मिस्टर कायर स्टाइमर जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, दे वेरी प्रो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. तो पूरा माहौल बहुत ही फेवरेबल है अभी यूके के लिए. So I think what I got from while we were discussing, from all of you, for a student to choose the best country options, right? I think PSW is one of the options they look for, right? From what I heard from you, Garima, right now that 2 years is there in UK, right? I got something from that at least 2 years will be there. So I think picking up the same thing with you, Priyanka, for Canada and Garima with you for UK. Since masters is of 2 years in Australia, I think the number is very different for Canada and UK, right? And do you think is it on the same level? Because a student can always get confused कि हमारे इंडिया में भी कि 2 साल का मास्टर्स है, तो बच्चे को पता है कि जब वो डिग्री आएगी ही इज वेरी श्योर कि 2 साल के मास्टर्स की डिग्री है, राइट? बट फ्रॉम व्हेन आई हर्ड कि यूके हैज ओनली 1 year मास्टर कोर्स, राइट? तो इज इट गोना इफेक्ट द हाउ डू वी पुट इट, द डिग्री दैट वी आर गेटिंग, इज इट सेम इन टर्म्स ऑफ वैलिडेशन एज इफ इन डिफरेंट कंट्रीज कि 2 साल का मास्टर्स कर रहा है बच्चा, 1 साल का कर रहा है, राइट? सो खुशबू, यूके में क्या होता है, बिकॉज द मास्टर्स प्रोग्राम्स जैसे मैंने कहा वो एक्सेलरेटेड है, इंटेंस है. तो आप बाकी कंट्रीज़ में काफ़ी जेनरिक टॉपिक्स भी पढ़ते हो, लेकिन यूके में आप अपने स्पेशलाइजेशन का टॉपिक ही पढ़ोगे. और जितनी स्पेशलाइजेशंस यूके में है वो किसी और कंट्री में नहीं है. एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट के लिए,
एक बिजनेस के स्टूडेंट के लिए यू कैन थिंक ऑफ अ प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम इज देयर इन द यूके. So I think it's research based masters where you have a clarity of what you're studying. सो यूके के जो मास्टर्स हैं दे डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 9 महीने आप क्लासरूम टीचिंग लेते हो जिसमें आप क्लास में जाते हो, और 3 महीने का आपका डेजिटेशन का पीरियड होता है जिसमें आप इंडिपेंडेंट रिसर्च करते हो. तो यूके के मास्टर्स आर वेरी बैलेंस्ड क्योंकि आप क्लासरूम टीचिंग भी कर रहे हो और आप अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च भी कर रहे हो. तो इसीलिए यूके के जो मास्टर्स हैं उनको हम बहुत इंटेंस मानते हैं, बहुत एक्सेलरेटेड मानते हैं, क्योंकि वो 1 साल में ही बाकी कंट्रीज जो 2 साल में पढ़ा रही हैं वो कवर कर लेते हैं. बैक होम वापस इंडिया आके यूके डिग्रीज आर डेफिनेटली रिकग्नाइज्ड. आप कहीं भी यूके डिग्री अपनी मेंशन कर सकते हो एंड यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ फुल फ्लेजेड मास्टर्स. उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप अमेरिका से पढ़ के आए हो तो 2 साल की मान्यता है लेकिन यूके के 1 साल की मान्यता नहीं है. दैट्स नॉट ट्रू. सो यूके डिग्रीज कवर मोर in terms of the academic pressure, and that is why they are more regarded back home as I well. think so for a student also, I think saving 1 year also is going to matter on the CV, right? If I'm going abroad, I just have to like do my 1 year masters, get the same sort of recognition, you know, the same sort of degree in comparison to any other country or be it in India, and still have the time to stay there for 2 more years on that Right. one masters, right? राइट. तो क्या होता है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फैमिली बिजनेस में ही वापस आएंगे, जिनका एम है टू गो गेट दैट इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड देन कम बैक टू द फैमिली बिजनेस. काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो ऑलरेडी 4-5 साल से काम कर रहे हैं. उनके लिए 2 साल टू स्टे अवे फ्रॉम वर्क इज़ वेरी डिफिकल्ट. यू नो, वो चाहते हैं कि हम 1 साल में यू नो यू शुड गेट बैक टू द वर्क फोर्स. तो इन स्टूडेंट्स के लिए यूके डिग्रीज मेक अ लॉट ऑफ सेंस क्योंकि आप 2 साल की कमिटमेंट नहीं कर रहे हो, आप 1 साल का कमिटमेंट कर रहे हो. एंड the faster you complete your degree, the faster you can go back to your family business, or you know you can get back to your work life. So इस तरह के प्रोफाइल्स के लिए तो मास्टर्स बहुत ही अच्छा रहता है यूके में, क्योंकि आप बहुत जल्दी और आप पढ़ वही रहे हो. ऐसा नहीं है कि you're compromising on your studies. So you're studying the same thing, but it's just that there are lesser छुट्टीज, there's more coursework, there's more engagement with the university. वो काफ़ी intense डिग्रीज हो जाती हैं. और इस तरह के प्रोफाइल्स के लिए जो ज़्यादा लंबा कमिटमेंट नहीं करना चाहते, the UK degrees work out the best. So coming to you, Priyanka, I want to know, while I understand that masters in UK and Australia, you know, have a very different span while we cover, right? Canada is one of the countries where people choose their course as for PR also. I think that one of the consideration that we have in mind, right? So I want to know ki, like, do the students choose for masters specifically for PR, or like is there any sort of, you know, categorization to choose a certain course for PR? आई थिंक आज से 2-3 साल पहले स्टूडेंट्स के माइंड्स में ना बहुत ज़्यादा होता था कि हमें पीआर रिलेटेड कोर्स जाना है, पीआर. बट नाउ द स्टूडेंट्स आर यू नो इनटू अ थॉट दैट दे वांट समथिंग दैट विल गिव देम द करियर प्रोग्रेशन इन देयर लाइफ. सो स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ फाइनेंस विल नॉट गो फॉर एनी कोर्स दैट विल जस्ट ऐड ऑन अ पीआर टू हिज प्रोफाइल. He will go for the course where he can get the advancement of his current profile and he can experience the the industry benefits as well. सो अगर मैं पीआर की बात करूँ कनाडा में, तो पीआर आपको हर एक कोर्स पे मिलती है अगर आप वो कोर्स एक TLI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से कर रहे हो. Okay. आपके पॉइंट्स एड ऑन होते हैं. पॉइंट्स डिफर करते हैं आपके डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कोर्स, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स जिसे हम बोलते हैं, और द करिकुलम ऑफ द कोर्स. Right. एंड अगर मैं PSW की बात करूँ तो अगर आप 1 ईयर का कोर्स करते हो तो आपको 1 ईयर का PSW मिलेगा. बट एनी कोर्स विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 16 मंथ्स टू 36 मंथ्स और मोर देन दैट आपको अप टू 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है कनाडा. Okay, so I think when we are choosing countries, 2 to 3 years is there for all the countries. If we choose the right course with the right university, we have that opportunity to look forward to, right? So while I've realized that जब भी हम स्टडी अब्रॉड की बात करते हैं, आई थिंक जो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो इंडियन फैमिलीज में वी हैव सीन, एंड आई थिंक यू ऑल आर एक्सपर्ट्स इन दिस, यू आर डूइंग दिस फॉर ईयर्स, so I think you are more aware than me about this, that the money factor is a very important thing, right? We have seen students getting the offers and not able to get through because their loan did not process, right? So I want to know from you कि बच्चे जो planning करते हैं, what are the basic things, how they plan their money matter in terms of how do they plan their fees, right? What kind of scholarships these countries can provide us, right? And I think you all had the students जिनके पास ऐसे scholarship मिले होंगे उनको, right? So I want to know more about that part first. So खुशबू, यूके के जो फंड्स हैं, यूके इज़ अ कंट्री जहाँ पे हमारे पास रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं. हमारे पास काफ़ी I एक्सपेंसिव think from the Ivy League to the tier group two to the universities, modern yeah. universities. So the fee can range anywhere from £25,000 per year to about
12,000 pounds also. UK में हम जब प्रोफाइलिंग करते हैं स्टूडेंट की, हम बजट को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि अगर बच्चा उस तरह की यूनिवर्सिटीज़ नहीं अफोर्ड कर सकता तो we don't want I to. think choosing the right university as per the tuition fees Right. the student can afford. Right. Scholarships are quite, I will say, if not the word abundant, I will say कि scholarships हैं UK में. काफ़ी scholarships automatically students को दी जाती हैं, जैसे international scholarships हैं या dean scholarship हैं, जो आपको कुछ नहीं करना, आपको 3,000 pound 2,000 pound automatically university देगी. कुछ scholarships merit based हैं, जहाँ पे आपको एक application form भरना है, essays लिखने हैं, and then the university will choose whether to give you the scholarship or not. But UK में scholarships हैं, मेरे अपने काफ़ी students हैं जिनको 5,000 GBP 8,000 GBP की भी scholarship मिली है. Funds थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल नहीं है UK के, हम लोगों को बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ता funds पे, not like Australia, you know how Madhav has to work. Its funds are very simple, but you know, if you plan everything well, that's required everywhere. गरिमा, so basically आप कह रहे हो कि अगर हमारे पास 15 से 25 लाख के बीच का रेंज है for the university fees, I'm saying tuition fees, we can choose from the top to the bottom sort of universities in UK, right? Depending on the location, जो हमारा location preference है. Coming to living and accommodation expense, what should be the quick amount I have in mind? Like अगर मेरे को सोचना हो कि इतना पैसे होने ही चाहिए. खुशबू, ये काम UKVI ने हमारे लिए काफ़ी आसान कर दिया है, क्योंकि उन्होंने एक बिल्कुल सेट फिगर हमें दी हुई है. अगर आप इनर लंदन में जा रहे हो, क्योंकि लंदन इज एन एक्सपेंसिव सिटी, Right, of तो course. द अमाउंट इज 12,006 GBP, तो आपको इतना पैसा दिखाना ही है UK गवर्नमेंट को. और अगर आप लंदन से बाहर की सिटीज़ में जा रहे हो, आप बर्मिंघम जा रहे हो, मैनचेस्टर जा रहे हो, ब्रैडफोर्ड जा रहे हो, सो द अमाउंट इज 9,207 pounds. So 9,207 pound roughly translates to 9.5 lakhs in INR. So I think I would say कि 10 से 12 लाख has to be 10 there. से 12 Plus the साढ़े tuition 12 fees. लाख का आप लिविंग लेके चलो, और 15 से 25 लाख तक का रेंज हमारा फीस का रहेगा. Coming to you, Priyanka, I think the process is very, very different for Canada when it comes to the money matters, right? So I just want you to also highlight, like, how do students plan for Canada in terms of money and tuition fees and everything? So खुशबू, वो जो फी स्ट्रक्चर है कनाडा में इन टर्म्स ऑफ GIC एंड ट्यूशन फीस बहुत मिनिमलिस्टिक है. So it starts from 18,000 Canadian dollars to 20,000 Canadian dollars for 1 year and a study cost, and $20,635 is the GIC amount. So इसमें क्या है, अब आजकल स्टूडेंट्स को जो है इतना नहीं सोचना पड़ता कि हमें लोन पे ही जाना है, हमारे पास फंड्स नहीं है, बिकॉज इन कैनेडा आइदर you can just pay the amount from your account, or any of your first family member can pay the fees on students behalf. And plus point is there is no show money. So आपको कोई show money नहीं करना that you have the limited funds in your bank account to sponsor your education. You have to just pay the 1 year fees and the GIC and are good to go. So ये बहुत बेनिफिट रहता है स्टूडेंट्स का इन एनी केस, अगर वो एडुकेशन Very smooth when it comes to Canada in terms of money matter. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को जो है 1 ईयर के प्रोग्राम पे लोन नहीं मिलता है, बट यस इन दैट केस स्टूडेंट कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर देयर फैमिली मेंबर्स टू They can स्पॉन्सर kind of देम. self-fund the amount for Exactly. tuition fees and everything because the amount is not very high. So they Exactly. can choose to go. Okay. So coming to you, Madhav, I think, of course, it seems very easy for UK and Canada both, right? For Australia, is it that simple or do we have a separate process going on? नहीं खुशबू, I think it is the most complicated one. I absolutely Okay. admit. It is only because when you actually go for a 2-year program or you go for a 3-year program, you definitely have to show the funds for only the first year, All right. right? लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि जो financials होते हैं, it has to be 3 months to 6 months old, Okay. right? उसके लिए, but of course, you have got a lot of scholarships available. I think the process then have to pick the very, very early if I'm planning for Australia. Absolutely yes. So अगर आपको process complete करना है for February, you definitely have to start in the month of July or August. Right, Okay. and then about the scholarships, you have got early bird scholarships, then you have got dean scholarships, you have got Okay. some grants available. So these scholarships, for example, if I'm a student, right, I want to apply to Australia right now. So do I need to directly apply for these scholarships or do I have to apply in a university, then I can go for these scholarships? How does it work? So it actually happens in both ways. जब आप अपनी Okay. application करते हैं, if you have a very good academic background or your professional background, in that case definitely आपको एक auto grant scholarship आता है. All right, Which so I could can be- directly apply. Absolutely, and which Okay. could be around 10,000 to 15,000 Australian dollars. But Right. then definitely you can apply for a vice chancellor scholarship, which can actually go up to 50%.
Right, so very recently we had somebody applying for a very good university in Australia, and the person was able to get 100% Vice Chancellor scholarship. Okay, I think that's gonna help the student throughout the whole Absolutely. 2 years Yes. at least for the tuition. And then fees. your parents, your grandparents, your uncle, your aunt, your brothers, everybody will be able to sponsor. Right? So we have a range of things to kind of plan if I'm planning for Australia. But just want to know what is the amount I should have in mind if I'm applying to the universities. Right. So What is for the living, basic average fees should be the mindset, Absolutely. So it is not exactly like UK has got within London and outside London. They have right? actually made it absolutely common. It is 29710. Okay. But along with it, for tuition fees, I think it is approximately 15 to 20 lakhs for a mediocre university, where up to 25 to 30 lakhs could be the world ranking university. Right. But सोचने वाली बात ये है खुशबू के the more you invest in a better university, the better ROI will gonna come in front. Right. Of course, I think we have to ensure what we are investing and what the ROI is going to look like while we choose that country, right? Yeah. I think coming to this part, while we discuss, the PSW, the finances, right? One thing which will definitely come as a very starting point would be कि शुरू कब करें, right? अगर मेरे को आज से, right, if I have to, let's say, today I plan that I need to go abroad, right? How much time do I plan for each country, right? And what is the basic procedure? If you guys can, just fill us in on the basic process of a country to go for the application process, and by the time visa process and everything. If I talk about Canada, उसमें 3 major intakes रहते हैं आपके, January, May and September, जिसमें से Okay. September is the biggest and the largest intake among Right. all. So अगर मैं एक intake start होने का procedure आपको बताऊँ तो usually application starts from 3 to 6 months prior, even 1 year prior as well, depending how the program is in demand in Canada. So अगर मैं documents की बात करूँ तो आपको सिर्फ basic documentation चाहिए to start your application is just your 10th, 12th and graduation documents if you are going for a postgraduate certificate, passport and IELTS. So these are the basic documentation which is required to start with your application if you're applying for the general diplomas or the postgraduate certificates or the diplomas. But yes, if you apply for the bachelor's degree or for the master's degree, just an addition into that, like आपको LORs चाहिए होगा, statement of purpose चाहिए होगा, and if a detailed resume. So these are the basic documentation. If you have all these documentation, you can just start with your application as soon as possible. And I think you mentioned IELTS that for Canada you'll require to go for IELTS. I think बाकी सारे documents I'll still have right away ready with me in a minute or so, or let's say in a day, right? Coming to IELTS, for a student, and I think that will be common for all 3 countries. If I have to plan my study abroad, what should be the time I should start preparing for IELTS or booking it maybe, right? And how should I plan that IELTS part as well before doing my application? If you have to plan for IELTS, खुशबू वैसे तो अभी डेट्स बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाती हैं स्टूडेंट्स को, बट इन एनी केस आपको लग रहा है कि अवेलेबल डेट्स नहीं है हमारे पास, इट विल टेक अनदर 1 month और सो टू हैव योर IELTS स्कोर कार्ड विद यू, बिकॉज बहुत ही लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको कंडीशनल ऑफर्स देते हैं IELTS पे. सो देन देयर इज एन ऑल्टरनेट फॉर द स्टूडेंट्स for which he can opt, which is a Duolingo exam, which is again an English exam for the students as an alternate. So by the time he will plan for his IELTS and start with his further process, he can just give the Duolingo, and within 24 to 40 hours, 8 hours, he'll get the result and start with his application process. So there are multiple ways if student wants, they can start with their application process for Canada. So Priyanka, just want to know from you, right, while we are discussing IELTS also, what is the time, if I have to let's say pick 3 time frames, ठीक है, कि मैं अगर आज अप्लाई करती हूँ तो मेरा ऑफर कितने दिनों में आ जाएगा, राइट, एंड उसके बाद मुझे वीजा में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, बिकॉज मेरे को अगर जनवरी इनटेक एज अ स्टूडेंट प्लान करना है या फिर मे इनटेक प्लान करना है, आई हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. कैन यू गिव मी अ टाइम फ्रेम फॉर इट? सो अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें, यूजुअली खुशबू, तो हमारा जो प्रोसेस मैंने जैसे बताया 3 to 6 months प्रायर होता है. अगर मैं जनवरी की बात करूँ तो जनवरी ऑलरेडी 2-2.5 महीने पहले से स्टार्ट हो गया है ना, अभी हमारा मे भी प्रोसेस में है. सो इन एनी केस अगर स्टूडेंट को लगता है कि भाई मैंने अभी IELTS नहीं दिया है या आई विल बी लेट फॉर द जनवरी इंटेक, देन एज एन ऑल्टरनेट ही कैन ऑप्ट फॉर द Duolingo कोर्स. सो Duolingo टेस्ट आपका इंग्लिश ऑल्टरनेट है एज अ ऑल्टरनेट फॉर द IELTS, जो आप दे सकते हो, जिसका रिजल्ट 24 to 48 आवर्स में आ जाता है. एंड बाय द टाइम यू प्रिपेयर फॉर योर IELTS एंड अदर वीज़ा फॉर्मेलिटीज, बाय द टाइम आपका ऑफर आता है, फीस पे करते हो, यू कैन ईजिली ऑफर दैट एग्जाम बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द कॉलेजेस आर एक्सेप्टिंग Duolingo. सो बेसिकली मेरी एप्लीकेशन चली जाएगी, मेरे को इसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा टाइम वेस्ट करने के लिए, एंड आई कैन मूव अकॉर्डिंगली. एंड इसके अलावा आप PTE भी दे सकते हो बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स हैव आल्सो स्टार्टेड टेकिंग PTE. एंड स्कोर्स डिपेंड करता है, आपका 58 स्कोर्स चाहिए, कईयों के लिए 54 चाहिए, बट येस अगर आप PTE से ही वीज़ा लॉन्च करना चाहते हो तो 60 इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए.
उसके बाद अगर मैं ऑफ़र की बात करूँ खुशबू, तो ऑफ़र कनाडा में ना इट्स लाइक यू अप्लाई एंड इट इज़ क्लोज्ड। Okay. So it is like first come first serve basis पे सारा procedure रहता है, but yes, institutes have started, you know, like giving the offers I think on we have time. to be very handy when it comes to Canada applications then. सो अगर मैं ऑफर्स की बात करूँ, कुछ इंस्टीट्यूट आपके 24 to 48 आवर्स में भी देते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अगर मैं बात करूँ तो आपके 3 मंथ्स का भी प्रोसेसिंग टाइम है। सो डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कौन सा आपका कोर्स है एंड कितनी जल्दी आप अप्लाई कर रहे हो। सो ऑल you know, all in one. I think so. It will be as per profiles. It will be as per the profiles. There's no time limit that we can say to the student कि इतने में हो ही It जाए. depends on the availability of the program and the course you are applying and at what time you are applying, what kind of a profile you have. So all in all, आपका overall criteria academically, आपका time duration, आपका you know the time of application, आपका overall scores, सब कुछ you know एक applications को you know figure out करता है. Coming to you, Garima, I think this is my personal maybe way of putting it that I feel UK का process सबसे simple होता है when it comes to study abroad, right? So I want you to help me understand कि what is the time frame a student should have in mind if I'm applying for UK, right? And you know what is the time in terms of getting my application done or the offer tat, right? तो एक सर्टेन टाइम फ्रेम क्या रहेगा? खुशबू, यूर राइट, यूके का प्रोसेस काफ़ी सॉर्टेड है, मतलब ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। और अगर स्टूडेंट्स शुरू से ही क्लैरिटी लेके चलें कि उन्हें क्या करना है तो बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं हैं यूके के लिए। यूके में सबसे अच्छी चीज़ है कि हम कंडीशनल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जैसे कनाडा में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, and we have to wait for IELTS, of course, either IELTS or Duolingo. राइट। इनफैक्ट यूके एक ऐसी कंट्री है जो काफ़ी स्टूडेंट्स को IELTS वेवर भी देती है। जैसे CBSE बोर्ड है, जो भी हमारे सेंट्रल बोर्ड्स हैं, और कुछ स्टेट बोर्ड्स को भी, अगर आपके इंग्लिश में क्लास 12th में मोर देन 70-75% हैं according to every university's requirement, then you don't even have to write the IELTS exam and you can, I think you know, apply. That's one of the reasons why UK is very picked up in terms of country right now, because we know as Indians, as you know, we belong from different regions, right? I think हर किसी की English इतनी strong नहीं होती, right? And people kind of feel the problem, you know, while they are giving IELTS test, that you know they have issues, they're not able to get the right score right now. So I personally feel because of that reason, UK is actually one of the countries where we have that space where we can apply without IELTS, right? And without getting to know कि what is the coming score I'm going to get through, and the application is done. तो पता चल जाता है कि offer भी आएगा मुझे मेरी प्रोफाइल पे कि नहीं आएगा without IELTS. राइट। तो आपको ऐसा नहीं है कि IELTS स्कोर आएगा फिर आप एप्लीकेशन लगाओगे, आप एप्लीकेशन पंच इन कर सकते हो, और जब सब्सिक्वेंटली यूनिवर्सिटी आपसे IELTS का स्कोर मांगेगी, IELTS, PT, Duolingo, TOEFL, all the 4 tests are accepted by the UK universities, तो आप सब्सिक्वेंटली अपना स्कोर भी उनको दे सकते हो। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप एप्लीकेशन लगाओगे, आपका कंडीशनल ऑफर आएगा, आप कंडीशंस मीट करोगे, आपका अनकंडीशनल ऑफर आ जाएगा। वंस यू गॉट द अनकंडीशनल ऑफर लेटर, आपको एक डिपॉजिट पे करना होता है, जिसके बाद आपका कैश का प्रोसेस स्टार्ट होता है। यूके में हम बहुत अंत तक भी एप्लीकेशंस लगाते हैं इनटेक के, I think there's a possibility of getting quick offers after that also. The quick offers, the quick turnaround times for the cases, and UKVI gives us more bandwidth. मतलब जो गवर्नमेंट है वो हमें कहती है कि 3 कैटेगरीज हैं वीज़ास की, स्टैंडर्ड, प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी। अगर आप बहुत ही लेट हैं तो आप सुपर प्रायोरिटी में 2 दिन में भी आपका वीज़ा आ सकता है। I think that's a very plus point कि if we can get a visa in just 2 days, while we Right. have that space to kind of pull that off. Right. Of course, it's more expensive, but you do have that option where you can apply and get the visa in 2 days as well. But I would always advise students to start at least 6 to 8 months, जैसे प्रियंका ने कनाडा का बताया, क्योंकि हम बहुत लेट अगर होते हैं तो फिर सब पैनिक have बटन to rush प्रेस into करने process. लगते हैं। So I would say if you're looking at January intake, the current students जिनके क्लास 12th हो गए हैं, बैचलर्स कंप्लीट होने वाला है, अगर आप जनवरी इनटेक के लिए देख रहे हो, Jan 25 के लिए, Feb 25 के लिए, this is the best time to start your applications. This is the best time to start working on your IELTS, on your statement of purposes, LORs, Everything CVs, that we can start. everything. Begin now. Begin today. Okay.
Coming to you, Madhav, Right. again, I think Australia process takes some time. From what my understanding is that that the documentation work is very very high in terms of comparison to the countries, Right. right? And I think the turnaround time for offers as well takes some time, right? So if you can help us know what a student should be have, like the time student should have in mind to do so. Australia. So Khushbu, I think Australia का application process comes out to be सबसे आसान process right now. Okay, that's Right. surprising. Of course, and after listening to Priyanka and Garima, I can actually guarantee on this that it comes out to be the most easiest one. Okay. I'll tell you how. So if you want to make an application to Canada, you definitely need to have IELTS Right. or an English examination, Of course. examiner for that matter. But in Australia, you don't actually need that. Okay. Second thing is, if you want to make an application, you need LORs, SOPs in UK, Right. but you actually don't need that in Australia as well. Okay, so I Yeah. think So Australia guys, comes I to admit that financials could be a little lengthy as compared to other countries. Right. But if you compare the applications and the procedures, I think it is the most easiest one right now. So if you don't have your IELTS right now, or Right. definitely LOR SOP की requirement नहीं होती है, so you can actually start your application with your academics and you're working with your passport right now. Okay, so just want to understand one more thing. What is the turnaround time for offer letters? Because I think the documentation work is very high, right? Apart from the fact that, of course, we do not require IELTS, we do not require the LOR SOP, which makes it very easy. Yeah. But what is the time for offer to visa and then visa to come through also for Australia? So for Australia, universities like Sydney, Queensland, Right. Monash, if you're ready with all the documentation, we can actually help you with your offer letter as soon as 15 working days. Okay. So getting an offer letter from a university which is World Top 18 or World Top 37, I think that comes out to be very different from other countries, Khushbu. I think so. This also helps with one more thing. The student have a clarity while they apply. I think I've seen a lot of students, they have applied, let's say 2 months back, and now they have no update from the university. They feel helpless, right? And I think that's where you guys come in and help the students while they apply to the universities, right? But I think getting the offers on time is one of the things, because that gives us clarity while the student plan for study abroad dream, right? Yeah. Thank you so much for all for coming today and giving us this inputs and information, and I'm sure this is going to help a lot of students out there, right, while they plan their dream destination to go abroad. Thank you, Khushbu, for having us here. यस खुशबू, थैंक यू अ लॉट. आई थिंक आज मुझे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बारे में बहुत चीज़ें पता चल गई, तो हमारे स्टूडेंट्स को तो आज बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिली होगी. Absolutely, Garima and Priyanka. Thank you so much. Thank you, Khushbu. And yes, we are available all the time. राइट. Yeah. I hope this session has been helpful for you, and you can always drop down your comments, your queries in the comment section for us, and stay tuned till the next episode.